प्रोफेसर शरद महंत स्मृति व्याख्यान माला के इस 90वें कार्यक्रम में मैं सबसे पहले तो जिन्होंने प्रोफेसर शरद महंत जी को तैयार किया, जो वातावरण मिला, वो शंकर देव और माधव देव के चरणों में बहुत बहुत वंदन करता हूं कि उन्होंने इन नामघरों में जिस प्रकार का संस्कार देकर के व्यक्ति बनाने का प्रयत्न किया, उसी का परिणाम है कि आज हम उस महापुरुष के इस व्याख्यान माला के अवसर पर उपस्थित हैं। मैं आज शरदचंद्र महंत जी को भी स्वर्गीय को नमन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पिछली बार भी यहाँ उपस्थित था और आज भी उपस्थित हूं। मैं माता जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, आपके परिवार को बहुत बहुत नमन करता हूं कि आपने एक श्रेष्ठ व्यक्ति के भावों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सतत कार्यक्रम प्रारंभ किया है और उसके कारण से ये 9वां व्याख्यान माला जो आयोजित हो रही है, उसमें आपके उस फाउंडेशन का सबसे बड़ा योगदान है। मैं सोचता हूं इसके लिए तो फाउंडेशन की स्थापना करने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जिस भावना से इसको प्रारंभ किया है वो निश्चित रूप से परिणाम की ओर आगे बढ़ेगा। ये एक सौभाग्य है कि मैं पिछली बार भी कार्यक्रम में उपस्थित था, पिछली बार भी उस व्याख्यान माला में एक श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा विषय को प्रतिपादित किया था और आज भी हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसे जाने माने इतिहासकार, अर्थशास्त्री और एक प्रधानमंत्री के आर्थिक विकास में एक तरह से सलाहकार आज हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमारे सामने ये विषय रखेंगे। मैं संजीव सन्यास जी का इस ट्रस्ट की ओर से, आसाम की ओर से, हम सब की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। I did not have the opportunity of knowing Professor Mahanto personally, but I am told that he had two great loves. One was the love of history, and the other was to teach and mentor young students. So I hope that today's lecture, which will be about the origins of our civilizational identity and about why we call ourselves Bharatiya and why we call our country Bharatvarsha. It's a very long history and a very interesting history, and I have two eminent scholars to help me chant out the relevant sections from our sacred texts so that you know exactly what I'm talking about. Now, one of the first things that we have to deal with is that there has been a colonial denial of our Indian civilizational identity for a long time. So although we Indians, or Bharatiya, have considered ourselves a civilizational nation for a very long time, for obvious reasons, colonial powers who occupied our country denied the fact that we had a civilizational identity. And so you had, for example, Sir John Strachey, acting Viceroy of India in 1872, making a statement that the first and most essential thing to learn about India is that there is not and never was an India. Really? Then what was the East India Company all about? Then there was Winston Churchill, who said, India is a geographical term. It is no more a united nation than the equator. So what I'm going to try and do is to try to prove to you that what the colonial occupiers of our country were saying is absolutely untrue. Obviously, as a colonial power that was occupying India, they wanted to deny our identity. The sad fact is that 76 years after independence, there are still scholars, politicians, and and intelligentsia who question this civilizational identity. But I hope to show to you, beyond doubt, how deep these roots are. Economic Advisory Council to Prime Minister's member, Sri
সঞ্জীৱ সান্যাল ডাঙৰীয়াক তেখেতে যেটো বিষয়ৰ ওপৰত বক্তৃতা প্ৰদান কৰিলে সেই বিষয়টো হ'ল ভাৰতবৰ্ষ দ্য অৰিজিন অফ আৱাৰ চিভিলাইজেশ্যনেল আইডেণ্টিটি লগতে নৱাৰুণ বৰুৱা নামৰ আমাৰ এজন উদীয়মান উঠি অহা এটা ডেকা ল'ৰা আমাৰ তেওঁ অক্সফৰ্ডত ৰিচাৰ্চ কৰি আছে আমাৰ কামৰূপৰ ৰজা পৃথুৰ ওপৰত তেখেতে গৱেষণা কৰি আছে আমি যেনেদৰে লাচিত বৰফুকন আমাৰ গৌৰৱ ৰজা পৃথু আমাৰ গৌৰৱ আমি সেই ৰজা পৃথুৰ ওপৰত যিখিনি গৱেষণা কৰি এতিয়ালৈকে পাইছে সেইখিনি আজি ইয়াত উপস্থাপন কৰিলে Today I have come here to deliver the Professor Sarath Mahanta Memorial Lecture for 2024. The topic for this lecture was Bharat Varsha, the origins of our civilizational identity, and the basic idea behind this is that to present the data to show that our civilizational identity is thousands of years old, maybe 5,000-6,000 years old, that it is an identity that has evolved over time. I presented in how it evolved from a relatively small tribe called the Bharatas, and how the idea of Bharata then spread till it covered the entire subcontinent. And today, people who are nowhere near Haryana consider themselves Bharatiya. Why did that happen? Because we accepted a certain civilizational contract. And so I explained what the origins of the contract is, what it says, and how in medieval times, in modern times, we have kept reiterating that. So much so that the framers of the Constitution, when they were writing the Constitution, were very conscious that the Indian Republic, the modern Indian Republic, is merely the modern manifestation of a very old civilizational nation. And I presented lots of information. It was, of course, an hour-long lecture, but there is a lot more information than what I presented. But hopefully the audience found it interesting.